All right, so today we have to do Hess cycle or Hess law. Now, this is just another name for law of consumption of energy. Law of consumption of energy क्या कहता है? क्या that energy is neither created nor destroyed but changes from one form to another, right? So हमारा कल जो हमने डेल्टा एच किया था वो क्या था? डेल्टा एच was the energy of the products minus energy of reactant. अब जरा इसको एक तरह से इस तरह सोचो आप कि रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी होती है और कुछ उसके पास डेल्टा एच उसके अलावा होता है, and that energy is the same as the energy of the product. So overall the reactant's energy and the delta H that it has is equal to the energy of the product, and we see it in the graph as well. Like in the graph that we see, तो हमें पता है कि यहाँ पे ये ऐसे आता है. So the energy of the product is over here, which is nothing but this plus this. In other words, product plus this much energy will get me to the reactant. Yeah, reactant minus this much energy will get me to the product. And same is the case for endothermic process. So हमारे पास ये law of conservation of energy को हम ग्राफ में या एक्सपेरिमेंट में जब शो करवाते हैं तो हम उसको ऐसे डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट लिख देते हैं. और इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का जो सफर है, it has the energy that it needs to break the bonds, energy that is released in making the bonds, and overall that the difference is equal to delta H, but no energy gets wasted. So अगर A plus B makes C, so एक तो तरीका ये कि ये डायरेक्टली ये बना लें और इसकी कोई डेल्टा H होगी, but the examiner says, oh sorry, the Hess law says कि ये डेल्टा H है ना, ठीक है, कोई मसला नहीं. बट इमेजिन अगर ये B पहले इससे बनता O plus M और फिर O plus M से C बनता. If that was the case, if I had this situation where they did not make C directly but they made it through O and M through an indirect path, the overall energy will still be the same because no energy is wasted. And that's law of conservation of mass. In simple terms, what is Hess law? Like the simplest term, Hess law says the delta H of direct path is equal to delta H of indirect path. In any question, this is what Hess law is. Your job is to figure out what's the direct path, what's the indirect path. In many cases, you might want to write this O plus M yourself and then figure out the missing part using this. But if you're clear with what Hess cycle is, then that is this. ये चीज आपने ज़हन में रखनी है. So what's your job? Any question on Hess law? Identify two paths, one direct, one indirect, and then put them equal. That is all. अब वो paths हमारे syllabus में दो हैं जो मेनली आते हैं. वैसे तो there are multiple ways of looking at it, but हमारे सिलेबस में मेनली दो पाथ फॉर्मेशन दो तरह की होती है. एक है फॉर्मेशन और एक है कंबशन. These are the two main categories of reactions that we see. ठीक है, और हमें बस डायरेक्टली इसी को ही करना है. So I'm going to show you both of them through an example. Carbon plus limited oxygen makes carbon monoxide. Okay. Now, formation and क्या कहते हैं combustion दोनों में ये केस चल सकता है. Problem is in formation this is a little tough to do. ठीक है? Why? Because the formation of carbon monoxide is literally this same equation. तो इसका indirect path अब क्या बनाएं हम? मुश्किल हो जाएगा. So to solve this problem we might want to do the combustion process. क्यों? हम इसको भी burn कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी burn कर सकते हैं. ठीक है? So अब देखते हैं कि हम indirect path कैसे बनाएंगे. कार्बन को burn करो, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. ऑक्सीजन को burn नहीं कर सकते. एंड कार्बन मोनोक्साइड को burn करो तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. ठीक है? अब कंबशन बन गई. अब हमने क्या करना है? What we have to do is we have to find a way कि अच्छा मुझे बताएं what is this path.
This is combustion of carbon. So what is the delta H combustion of carbon? That is -394. ये वैल्यू आपको एग्जाम में गिवन होगी. अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड की कंबशन क्या है? ये मेरे पास -283 है. तो ये वैल्यू क्या होगी? अब आपने कैसे कैलकुलेट करना है? पिक योर स्टार्टिंग पॉइंट, पिक योर एंडिंग पॉइंट, एंड दैट्स व्हाट यू नीड. सो दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज माय एंडिंग पॉइंट. ये मैंने पिक किया. तो मेरा डायरेक्ट पाथ है ये, इनडायरेक्ट पाथ है ये. And I will use my Hess cycle that delta H of direct is equal to delta H of indirect. So मेरा डायरेक्ट पाथ है ये, तो उसकी डेल्टा H है x. इनडायरेक्ट पाथ है ये, तो दिस इज -394 minus -283. Why is it minus minus? Because the arrow is downwards and I'm going upwards. My path is upwards. So there you go. My x is going to be -394 plus 283, whatever that comes out to be, 101 kilojoules per mole. Just like that, straightforward. ठीक है? अच्छा, एक और करते हैं. हमें क्वेश्चन कहते हैं कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन. Sir, Yes? how would you know where to put the arrows though, like direction of the arrow? देखो, बड़ा सिंपल है. अगर आप कंबशन कर रहे हो तो आप इसको भी बर्न करते हो, इसको भी बर्न करते हो, तो दोनों का एरर प्रोडक्ट की तरफ नीचे को आता है. हमेशा ऐसे ही होता है. आप उसको बर्न करते हो, जो प्रोडक्ट आप बर्न करके वो यहां पे आ रहा है. फॉर्मेशन में आप रिएक्टेंट को भी फॉर्म कर रहे हो, प्रोडक्ट को भी फॉर्म कर रहे हो, तो उनमें यूजुअली एरो ऊपर को जाता है. तो अगर आपने रट्टा ही मारना है ना, तो फॉर्मेशन में एरो ऊपर होगा और कंबशन में एरो नीचे होगा. अच्छा, अब लेट सपोज फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन करते हैं. एग्जामिनर सेज फाइंड द फॉर्मेशन ऑफ CH4. ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ CH4 ये x है हमारे पास. ठीक है, अब प्रॉब्लम अगेन, इसको फॉर्मेशन से करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ कार्बन क्या है? कार्बन इटसेल्फ इज एन एलिमेंट, इसकी कोई फॉर्मेशन नहीं है. तो जब आप फॉर्मेशन ना कर पाओ तो आप इसको कंबशन से कर लो. सो लेट्स ट्राई इट. लेट्स ट्राई टू बर्न कार्बन. कैन वी बर्न कार्बन? यस. सो हम कार्बन को बर्न करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. हाइड्रोजन को बर्न करेंगे, वाटर बनेगा. एंड बिकॉज यू आर बर्निंग 2 हाइड्रोजन, सो you'll get 2 water. Similarly, if you burn carbon methane, you also get 1 carbon dioxide and 2 water. यही है ना, कोई फर्क तो है नहीं. अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही हो तो बैलेंस कर लेना. Okay, so now let's do it. Let's take the values. Combustion of carbon, we just had this value. This was -393. Combustion of hydrogen, this was -286 for 1 mole. I am burning 2 moles, so it is going to be 2 times that. And combustion of CH4, ये भी value हमें given है -890. So my direct and indirect path. This is my starting point. This is my ending point. This is my direct path. This is my indirect path. So if you are clear with what your direct and indirect path is, कोई question आपको challenge नहीं कर सकता है. So delta H direct equals delta H indirect. So direct is x, indirect is -393 -286 times 2 -890. क्यों? क्योंकि ये ऊपर को जा रहा है. And this is going to be my answer. Pretty straightforward. ठीक है? अच्छा, now let's try to do a formation का question, जो combustion से नहीं कर सकते हम. So here's an equation. 2H2O plus 4NO2 plus oxygen makes 4HNO3. Problem is, we know that it's unlikely to burn nitric acid, और NO2 फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होती, तो इसको भी बर्न नहीं कर सकते आप, वाटर को भी बर्न नहीं कर सकते आप. सो कंबशन से ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, तो फॉर्मेशन से ट्राई करते हैं. सो हाउ डू यू फॉर्म वाटर? व्हाट डू यू नीड? यू नीड हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन. ठीक है. हाउ डू यू फॉर्म NO2? यू नीड नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पहले से हमने लिखी हुई है, तो हमें उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है. अच्छा, और
नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए भी हमें यही चीजें चाहिए. बैलेंस कर लेते हैं. I find this side to be easier to balance. So 4HNO3 में मुझे 2H चाहिए. I need 2N2 and I need 6O2. So do you see how easy it was to balance because of this one? It was also easy, but थोड़ा सा challenging होता compared to this one. But the advantage of using a cycle here is that this is now balanced as well. Now my job is to pick a starting point, pick an ending point, find a direct path, find an indirect path. अच्छा, अब फॉर्मेशन वैल्यूज जो मुझे एग्जामिनर ने दी हुई हैं, वाटर की फॉर्मेशन वैल्यू इज -286. अगेन दिस इज फॉर 1 मोल. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन वैल्यू इज +33. ऑक्सीजन बीइंग एन एलिमेंट इट इज 0 and nitric acid is -173. Okay, so my problem is delta H direct is equal to delta H indirect. What do you want to be your starting point? Pick one. Rania, 1, 2, 3. What's your starting point? Sir, 3. 3. Okay, so this is my starting point. What's your ending point? 1. 1. This is my ending point. This is fun. So अब मेरा डायरेक्ट पाथ है ये और इनडायरेक्ट पाथ है ये. ठीक है, कोई इशू ही नहीं है. डायरेक्ट पाथ ये है तो वो हो जाएगा 33 + -286 और इनडायरेक्ट पाथ हो जाएगा -173 + -x बिकॉज x ये है और मैं उसके ऑपोजिट चाह रहा हूँ. Sir, sorry, आखिरी वाला फिर से समझाएंगे? Which part? Like the equation you just made. So because I picked this to be my starting point and this to be my ending point, my direct path is this. So this 33 is my direct path, this -286 is my direct path. तो मैंने उनको direct में लिख दिया. And my indirect path is starting. And because the arrow is going upwards, you're using plus. देखो, arrow अगर उसी side पे जा रहा है जिस side पे मैं कर रहा हूँ, then that is going to be my answer. Yeah. Yeah. So there you go. Indirect हमने लिख लिया. And there you go. So 33 - 286 + 173 is equal to -x. जो भी आंसर आ जाता है, it's a pretty straightforward question. हमारा मेन चैलेंज क्या होता है? Drawing the cycle and finding the paths. को आपने 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना था? Oh yes, thank you so much. So इसको 2 से करेंगे और इसको 4 से करेंगे और इसको भी 4 से करेंगे. Because I'm getting 4 moles of this, 2 moles of this, and 4 moles of that. Thank you. Yep. तो हो गया ये question. Okay. I'm going to give you an equation. I want to burn ethane and I will make carbon dioxide and water, of course. Tell me, first step, tell me, will I use combustion or will I use formation for this question? क्या मैं कार्बन डाइऑक्साइड को बर्न कर सकता हूँ? क्या मैं वाटर को बर्न कर सकता हूँ? नहीं ना. That's why we can't use combustion. देखो, combustion में दोनों sides burn होनी चाहिए. We can't. So we'll resort to formation. Formation तो हमेशा लगती है, unless you want the formation वाली value. So go on. अब formation करते हैं इसकी. So try to make the cycle and send your answer to me on WhatsApp. All right. So I'll just draw it and then you can match your answers. So because we are forming these, so how do you form these? I need carbon and I need hydrogen. I don't need anything to form oxygen because it's an element itself, but to make carbon dioxide, again, I need carbon and hydrogen and oxygen. And for water, I need hydrogen and oxygen. So I've written the elements. Now, formation is always towards the products. So the arrow should be like this. Okay, so it's important that your arrows are correctly determined in the correct direction. Okay, now to balance it out, I think this side is easier to balance. So I'll just do 2 carbon, 3 hydrogen, and 7/2 oxygen. Yeah, so oxygen is still the same on both sides. Okay, so now the values. For carbon dioxide, the value is -394. Again, this is for 1 mole.
For water, it is 288. And for ethane, it is minus 92. So can you, sorry, minus 92. So can you use this, pick your starting point, pick your ending point, and make an equation? Tell me what value you get. Sir, can you tell the three different Hmm? can you tell the three different equations? What three different equations? Sir, वो जो आप 1 2 3 करते हैं. It's totally your choice. 1 2 3 जो मर्जी पिक कर लो. It's totally your choice. Starting and ending point is completely up to you. Sir, is it minus 590? I think it should be 1560. अभी देखते हैं. So let's say my starting point is this and my ending point is this. I'm keeping things simple. So this is my direct path and this is my indirect path. So for direct path, it is x. For indirect path is minus 92 plus 2 times minus 394. Why 2 times? Because I'm getting 2 carbon dioxide and this is for 1 mole. Plus 3 times minus 288 because I'm getting 3 moles of water. So this will give me minus 1560 kilojoules per mole. And that's my answer. Okay, so there you go. Sir, don't you Yep. have to multiply minus 92 with 2? Why 2? Because minus 92 is the value for making 1 mole of this. And I have 1 mole of this. Yeah. All right, let's do another problem. This is the equation. Okay, first question. Can we use combustion for this? No. Why not? Because we can't burn carbon dioxide. We can't burn water. So the products we can't burn. That's why. Nitrogen we can burn, but not water or carbon dioxide. So we can't use combustion. So we'll do formation now. Go on. Make the equation. Make the cycle. Okay, so I hope you've done it. So this one should go carbon, nitrogen, hydrogen, oxygen. These are the 4 elements. And I need this, I need this, this, and this. Nitrogen can't be formed because it's the same thing. Nitrogen is, of course, 9 nitrogen. I find this one to be easier for balancing. So let's pick that. 4 carbon, 12 hydrogen, and oxygen kitna hoega? 4 times 2, 8, 8 plus 12, 20. So 10 oxygen. Okay. So I'll give you the values. For carbon dioxide, the value is minus 394, minus 288, 53, minus 20. So go on. Pick a starting point, pick an ending point. You have to find this and then make the cycle. Sir, minus 5344. Okay, I didn't calculate it, so I'll just try to solve it. Okay, so these values are again just for 1 mole. The made a direct or indirect path. Let's say again for simplicity, I'm taking this as my starting point. This is my ending point. My direct path is this. My indirect path is this. So direct path is x. Indirect path is 4 times minus 53 because my opposite side se aa raha hu. Minus 5 times minus 20 again because it's opposite. Plus 4 times minus 394. Plus 12 times minus 288, and for nitrogen is 0 because it's an element. Element की हमेशा formation 0 होती है. So I'll just add all of these up. Sir, 394 से पहले आपने प्लस क्यों किए? देखो जो चीज अगर आपका पाथ और एरो दोनों एक डायरेक्शन में, so it's plus. If they're in opposite direction तो तब वो आप माइनस करते हो. जैसे यहाँ पे मैंने इसे माइनस किया है, यहाँ पे मैंने इसे माइनस किया है. ठीक है, मतलब another way to look at this would be कि यहाँ पे value was positive 53, but मैंने इसको माइनस करना है. तो जो चीज पाथ आपका जो indirect path है और जो आपका arrow है, if they're in opposite direction you'll do minus, if they're in the same direction you'll do plus. ठीक है, so minus 4 times 53 minus 5 times minus 20 plus 4 times minus 394. Okay, so I'm getting minus 5144, and that's my unit, and we have done it. So that is Hess cycle, literally just that.
I fail to understand students को इतना problem क्या होता है. As long as you're clear with the direct and indirect path and how to draw it, तो आपका काम आसान है. And good news is in AS you just need to know either combustion or formation. उससे अलावा कुछ आता ही नहीं. All right.